the sum on collision, write this down. Consider a ball falling from some height h, falling from some height h. Full stop. Let E be the coefficient of restitution. Let E be the coefficient of restitution. E be the coefficient of restitution between the ball and the ground. Between the ball and the ground. And the ground, and ball rebounds again and again, and the ball rebounds again and again. Okay? Can you understand the situation? That is a ball, a drop from a certain height, and the ball is colliding and rebounding again and again. So what we need to do? না এমনি নরমাল ফ্লোরে বল একটা উপর থেকে ফেললে সেটি একবারই ড্রপ করে রাখতে যায়, রিবাউন্ড তো করে, সেটাই করছে। velocity, हाँ, then find क्या क्या फाइंड करने बोल रहे हैं? First velocity after nth collision, second height attained after nth collision, total distance traveled by the ball before it stops. Total distance traveled by the ball before it stops. And the total time of motion. Total time of motion. Is that clear? मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ से बॉल गिर रहा है, एक बाउंस किया, बाउंस करने के बाद एक सर्टेन हाइट तक चल रहा है, उसके बाद फिर बाउंस कर रहा है, फिर एक सर्टेन हाइट तक चल रहा है, फिर बाउंस कर रहा है, ऐसे ग्रेजुअली कम होते जाएगा। ठीक है? So first question क्या होता है? हाँ, velocity after nth collision. तो देखो अगर वो h height से गिरेगा, just before hitting the ground उसका velocity कितना होगा? कैसे निकाल रहे हैं लोग? चलिए इसको बताओ। हाँ, velocity just before hitting the ground. Just before hitting the ground for the first time. क्या होगा? B equal to root over of 2gh. क्या है? कहाँ से आया ये? कहाँ से ये वाला फॉर्मूला है? याद है सब लोगों को? जो लोग याद नहीं है, remember b square equal to u square plus twice as आया ना? So वहाँ पर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 डाल देंगे और s को h डाल देंगे और a को g डाल देंगे, we'll get this b equal to root over 2gh. लेकिन just after the first collision कितना होगा वेलोसिटी बताओ? How do you find it out? देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है ना, याद है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है?
v1 means just after the first collision let just after first collision velocity be v1. ठीक है, तो हम लोगों को what is that, what we know about the definition of coefficient of restitution. Coefficient of restitution का definition हो गया, अगर की जाए separation by approach means separation means after collision by before collision. So after collision क्या हुआ, ये बॉल बाउंस करने के बाद जो velocity है that is v1, और before collision it was falling with a velocity v. So this will be v1 by v. Now you say sir हम लोग तो पढ़े थे v minus u v2 minus v1 by u1 minus u2, ये पढ़े थे ना, यहाँ पर v2 minus minus कुछ नहीं किया, क्यों? Right, because the ground is at rest. So it is basically v minus 0 और ऊपर में 0 minus v1 उसका मॉड्यूलस है, ठीक है? तो इसलिए मॉड्यूलस में क्या होता है, वो तो साइन को खा जाएगा ना. So e will be equal to v1 by, so v1 is equal to e into v. v1 is equal to e into v. Now you need to make out in turn what will be the velocity up to which it will rise. What will be the height चाहिए तो तुम्हें velocity चाहिए. So let's do the velocity first. ये हो गया after first collision. So let the velocity just after second collision be v2. Second collision मतलब second bounce. Actually collision नहीं बोलना चाहिए, first bounce. ऊपर में collision ही बोले. Sorry. This is bad. The velocity just after second collision be v2. पेन से जो काम करना चाहिए वो नहीं करके दूसरा काम करेगा तो खत्म ही होगा ना. यहाँ पर पढ़ो जल्दी से. The velocity just after second collision be v2. So again we use this 0 minus v2 by v1 minus 0. क्या आएगा ना, तो e equal to v2 by v1 आएगा. So e v1 हो जाएगा ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल 1. तो ये ev v1 का वैल्यू था ना, तो बैठ जाएगा इसकी जगह में, तो क्या हो जाएगा e square v. फिर मैग्नीट्यूड पार्ट n टाइम्स, राइट. सो ऐसे अगर हम लोग करते जाए, देखो सिमिलरिटी थोड़ा देखो. फर्स्ट कोलिशन के बाद e का पावर 1 into v हुआ, सेकंड कोलिशन के बाद e to the power 2 into v हुआ. तो ऐसे हम लोग जितना कोलिशन करते जाएंगे उतना e का पावर बढ़ते जाएगा. सो therefore the velocity after nth collision will be e to the power n into v. Velocity after the nth collision will be e to the power n into v. मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है या नहीं? आया ना? आ रहा है? हाँ सर. बोले यार शबाब. आरेख करेंगे आज के लिए. हाँ प्राची अपन चालू हुआ तो परीक्षा ने बोले. परीक्षा शुरू तो बुखार चढ़ गया. हाँ? अच्छा listen होएगा सर. Let's sir. इधर होएगा सर. Just before taking. हाँ just before taking. This is done. हो गया first वाला part.
तो फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर आ गया हम लोगों का, हाँ या ना? हाँ सर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, हाइट अटेंड आफ्टर nth पोजीशन, मतलब आफ्टर nth पोजीशन वो कितना हाइट तक चढ़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, हाउ वी फाइंड दैट आउट? सी now velocity just before hitting the ground is v equal to root over of 2gh. So यहाँ पर लिख रहे हैं let the height to which the ball rises after first collision be h1. थोड़ा ध्यान से देखो, let the height to which the ball rises after first collision be h1. Then can I write that v1 is equal to root over of 2gh1? Therefore v1 equal to root over of 2gh1. Why? Very simple. देखो यहाँ पर कोलाइड करने के बाद तो उसका वेलोसिटी v1 हुआ ना, तो अगर वो h1 हाइट तक राइज हो रहा है आफ्टर फर्स्ट कोलिशन, देन इनिशियल वेलोसिटी इज v1, टॉपमोस्ट पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट? 0. तो वहां पर भी अगर हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस twice a यूज करते हैं, तो वहां पर भी v1 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh1 आ जाएगा. समझ में आया? जैसे यहाँ पर v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh आया, वैसे v1 भी रूट ओवर ऑफ 2gh1. यहाँ पर जब आफ्टर कोलिशन जब यहाँ तक चढ़ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है v1, फाइनल वेलोसिटी v है 0, और हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h1 ना, सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh अगर करेंगे हम लोग, 0 इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gh1 ना आएगा. सो क्या आ रहा है, v इक्वल टू v1 इक्वल टू रूट ओवर 2gh1 नहीं आ रहा है? So the v1 equal to root over of 2gh1 after first collision. So अब हम लोग को रिलेशन क्या बताया बोलो? Now we have already proved that v1 is equal to ev, मतलब root over of 2gh1 is equal to बोलो e into root over of 2gh. So हम लोग को h का रिलेशन चाहिए था ना, इसलिए b के जगह में हम लोग h सब्स्टिट्यूट कर दिया. Now you can square up both sides and you can write, so 2g cancels, h1 equal to e square h, e to the power 2n. এটা 1 এর জন্য স্কয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তারপর এটা করে রাখা যায়, at least দুটো স্টেপ করতে হবে, নাহলে we cannot conclude. Okay, you have to do at least 2 steps. রাহুল जो हो रहा है उसको फोकस करो. Don't, you don't understand if you are not, I don't have the energy to scold it, please do whatever you feel like. And after, let the height to which the ball rises after second collision be h2. Position B. Therefore, V2 equal to root over of h2 and again V2 equal to e square v. Read it. V2 equal to e square v. तो V2 के जगह में लोग वही कर रहे हैं, 2gh पुट कर रहे हैं and स्क्वायर भी कर दे रहे हैं. 2gh so e to the power 4 into 2gh. So एकांत h1 होगा. কোনটা एकांत h1 होगा. এটা v আছে তো, अच्छा. আর ইকুয়াল প্রুফ করলাম তো, v2 ইকুয়াল টু স্কয়ার v তো সেখানে ভ্যালুটা পুট করছি. অর্ক e স্কয়ার v1 নয় v হবে.
করছে হঠাৎ চলে যায় কোথায় রে ভাই 2g ক্যান্সেল হলে ও e to the power 4 into h. So now see for every endless two. 2 मतलब twice इसका twice the power में बढ़ रहा है ठीक है so therefore the height after nth collision will be e to the power 2n into h. Yes? হয়েছে? তারপর আমাদের কি করতে হবে? Total distance traveled by the ball. Right. This is important. Total distance traveled by the ball. স্যার কতটা কমছে প্রত্যেক পজিশনে আমরা এটা ক্যালকুলেট করতে হবে কতটা কমছে না মানে কতটা যাচ্ছে আমি বলছি কতটা যাচ্ছে না ফাইনাল রাস্তে জিরো কখন আমি জানি না ইট গো ফর ইনডেফিনিট অ্যামাউন্ট অফ টাইম তাই না তো সেটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো বাই ইনফাইনাইট জিপি সিরিজ বলছি এটা হয়ে গেছে সেটা আপনাদের আছে ক্লাস देखो पहले ऊपर से जब गिर रहा है तब एच हाइट जा रहा है लेकिन उसके बाद फॉर एवरी बाउंस इट इज ट्रैवलिंग द सेम हाइट ट्वाइस एक बार चढ़ते वक्त एक बार उतरते वक्त राइट सो h1 plus h1 फिर h2 plus h2 and it will go on till the infinite number of times so total distance traveled is equal to h plus 2h1 plus 2h2 plus 2h3 dot till infinity right so h रहने दे रहा है यहाँ पर रहने plus 2 कॉमन ले रहे हैं what is h1 क्या निकाले e square into h what is h2 e3 should be equal to 6 into h and so on till infinity right so you can identify every term if you divide it with the preceding term cancel होने से e square आएगा so e square is the common ratio हाँ till नहीं ये this will be an infinite हमने बताया था ना infinite GP summation का formula a by r minus 1 Total distance infinite. Sorry. 1 minus r. a by 1 minus r Into r less than 1 will have and you know coefficient of restitution is always less than 1 it cannot be greater than 1 right so you have h plus 2 into what is the first term and what is the common ratio e square so it will be 1 minus square so if you go for a simplification h minus h square plus 2h square. So that will be h plus h square by that is h taken common 1 plus e square by that is the total distance term. Well, so we use the infinite GP summation formula over here. Infinite GP summation formula is a by 1 minus r, where a is the first term and r is the common ratio. So out here a is e square h and r is e square. Now the last part of the question, it says total time of motion. So how do you find out total time of motion? Just find out the time taken for each step and add it up. You will find another GP. The same method, no difference. So time for the preliminary fall. Preliminary कहाँ से गिर रहा है? H height से गिर रहा है ना? So you know the formula is h equal to half gt square. Preliminary fall, मतलब first fall. H equal to half gt square. So T is equal to 2h by g
root over. Oh yeah. Similarly, T1 क्या है? हाँ, root over of 2h1 by g. But see, this time it will be taking twice. Once it is going up, another it is coming down. Is that clear? So इसीलिए, therefore, and T2 equal to root over of 2gh2 by h. Got it. So now, oh, अच्छा, but h बोलो तो h बोलो in terms of v लिखे नहीं आगे वाले बढ़िया करना ओ ना h in terms में दो आज बढ़िया so therefore what would we do? Total time taken is t plus 2t1 2t2 yes or no? তাহলে এটা কি হবে বলুন? n plus t T1 is 2 now I answer your question. 2h by g plus 2. h1 in terms of h was what? Let's work out h1 equal to e square h. h2 equal to e power 4h. Right? So if you put it over here, 2 square h by g plus 2 e to the power 4h by g 2 e to the power 6h infinity. Can you help me out? Can we take a root over of 2h by g common and write it as you understand why? Because we are making a square root for all of them, right? रूट के अंदर खाना हम लोग रूट का बाहर निकाल रहे हैं. Yes or no? I can be very unwell blunt. I won't make conceptual mistakes. Silly mistake हो सकता है इधर देखने में, but you know first term is e and the common ratio is also. So if we use this formula, infinite degree formula, it will be e by 1 minus, right? So you can take the root over of 2h by g common out. This becomes 1 plus 2e by, if you make a further simplification, it will become 1 minus e plus e. So it will also be a proper expression. 2h by g into 1 plus e by 1 minus e. देखो एलसीएम करो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा. एलसीएम का बात करते हैं एक ही एक्सप्रेशन आ सकता है, सेम एक्सप्रेशन. यस